हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौधरी डेटा वर्ल्ड चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम बात किए थे व्हाट इज जनरेटिव एआई। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी वाइटल वीडियो जिसमें कि मार्केट में चल रहे एआई नेम्स को हम क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज दैट और हम उसको कहां पे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो नेम्स आता है जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, डीप सीक, हगिंग फेस, ओलामा, इन सब टाइप के कई सारे नेम्स हमारे इर्द गिर्द चल रहे होते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट इज एग्जैक्टली दीज नेम्स आर। इन पर्टिकुलर नेम्स के बारे में इस वीडियो में क्लियर कैटेगराइजेशन हम देंगे कि किसको क्या किस कैटेगरी में हम रख सकते हैं एंड व्हाट इट कैन प्रेडिक्ट टू बी और व्हाट इट कैन बी यूजफुल फॉर। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। सबसे पहले आता है व्हाट इज एआई ऐप। एआई ऐप क्या है? Let's first write it down. AI apps. Apps like ChatGPT, Gemini app, Cloud app, Microsoft Copilot, Perplexity, Grok, Meta. Correct. These are some of the apps which end user uses in day-to-day activity. And most of you guys are aware already कि how these apps serve people and क्या ये किस particular use cases में काम आता है. Okay, now it comes AI tools. So let's list it down first. Midjourney, Adobe Firefly, Gling AI. So these are AI tools. अब now question comes to your mind कि what's the difference between AI apps and AI tools? It's nothing but it get specialized when any of the application get specialized for some particular specific work. That is only called as AI tools. AI apps जो भी हम देख रहे हैं that is created for conversation purpose. AI tools is specified for some of the purpose जैसे कि Adobe Firefly that is specified to generate image or generate media. Gling AI it's specified for basically video editing, video generation. इन सब टाइप के वर्क के लिए Gling AI हमारे पास है. How they differ? How actually they differ behind the scene? तो होता क्या है कि हमारे पास एक बिहाइंड द सीन में एआई मॉडल्स चल रहे होते हैं. वो एआई मॉडल्स इन एआई एप्स और एआई टूल को बैक करते हैं, बट ऑन एप्लीकेशन लेयर whenever we develop some application there is a application layer जहां पे कि we specialize that particular generic AI model for specified output. That's the basic difference between AI apps and AI tools. So let's what AI models we are having in the market. So GPT, Gemini, Cloud, Llama, Mistral, DeepSeek are some of the famous AI model, which is nothing but the AI engine you can say, which is used behind these AI apps and AI tools. These are nothing. ये हमारे पास ऐसा नहीं होता है कि कुछ इस टाइप से हो कि हम इन AI models को directly as a end user use कर सकते हैं. No, it's not. These AI apps and AI tools are built on top of this AI model. That's the basic difference. Okay. Now it comes a platform and ecosystem. And here only there is a big confusion. मतलब बहुत सारे लोगों में जो confusion है वो due to this particular category that is AI platform and ecosystem. ये एक ऐसा चीज होता है. Let me first try. These are not AI models, not end user app. तो फिर ये है क्या? So this particular platform are such platform which are getting used by generative AI developers to basically create any of the application, deploy it and host it. ये directly किसी end user के द्वारा consume नहीं किया जाता है. It is getting used by some of the developer to basically develop their model, to access the model, and by accessing it, create something, then deploy and host it. To do all these things, this particular AI platform. And what are those? कौन से हैं AI platforms and ecosystems? The famous one, Hugging Face, Google Vertex AI, AWS Bedrock, then Azure AI Studio, then Databricks. So these are most of the common AI platform and ecosystem जो हम सभी और actually developers use करते हैं to access different AI models. Those are GPT, Gemini, Claude, Llama, Mistral and DeepSeek. So all these models are getting accessed by these particular
platform, that is Hugging Face, Google Vertex AI, AWS Bedrock, Azure AI Studio, and Databricks. I hope the confusion is clear till now. Now, there is a separate category that is called as local AI tool. Let me first write. What is local AI tool? So these tools are which people run AI model in their local machine. अभी हमारे पास मान लो एक लैपटॉप है, अगर हमारे पास कोई एक्सेस ना हो इन AI models का, that is GPT, Gemini, Claude, Llama, Mistral or DeepSeek. But even then, if we want to basically take advantage of the large language model, that is these AI models, तो हम कैसे उनको एक्सेस कर सकते हैं? What we need to do, एक पर्टिकुलर हमारे पास इसके लिए टूल है जैसे कि ओलामा या LMS स्टूडियो, जिनको कि हम अपने लोकल मशीन पे रन करेंगे. So our data and our conversation will not go outside our machine. इस मशीन के बाहर नहीं हमारा फिर जाएगा. Whatever that model is getting hosted on cloud, that will be taken into our system, और फिर हम उसको कंज्यूम कर पाएंगे with the help of these tools, that is Ollama and LMS Studio. These are some of the famous, जिसको कि यूज करके हम अपने लोकल मशीन पे any of the AI model को हम कंज्यूम कर सकते हैं. We will not interact with cloud anymore. So these are local AI tools. Then it comes a final one, that is agent and workflow framework. Last में हमारे पास आता है, there are few of the workflow framework automation things which is core developer things you can say, जो कि डेवलपर ही यूज करते हैं. देयर इज नथिंग टू गेट अवेयरनेस ऑफ, मतलब किसी भी हमारे एंड यूजर को इन चीजों का अवेयरनेस नहीं होता है. What these are and why even these are. उसमें आता है हमारे पास LangChain, LangGraph, Llama Index, Creo AI, AutoGPT. These are some of the frameworks. I will not talk too much of these things, but just to make sure that you are aware of these terms, and you should at least be able to categorize now whenever you hear of something in these categories. So let me list it down. Chain, LangGraph, Llama Index, Creo GPT. Okay? तो हमारे पास basically हो गया, these two things are which you basically use, end user use. These many things are which developers use. There is nothing to relate with, you may say, the end user. End user इनको use नहीं करते. These are specific to developers. But for the awareness purpose कि what all these things are, you should not be confusing anymore whenever the discussion goes on कि ये कहाँ पे किस कैटेगरी में फॉल करेगा. तो मेरे पास मैंने एक लिस्ट डाउन किया हुआ है मेंटल मॉडल. जस्ट टू क्लैरिफाई, मॉडल आर ब्रेन. ये जो AI मॉडल है, दीज आर ब्रेन. एप्स आर व्हाट यूजर इंटरेक्ट विथ. देन प्लेटफॉर्म हेल्प बिल्ड टू होस्ट AI. जो प्लेटफॉर्म है हमारा, दिस इज टू होस्ट AI. क्रिएटिव टूल जनरेट समथिंग. दीज क्रिएटिव टूल्स, दैट इज AI टूल्स, क्रिएट समथिंग और जनरेट समथिंग. लोकल AI टूल्स, this local AI tool run AI model on local machine. This agent and workflow framework helps AI act and complete multi-step task. Multi-step task end to end, जिसको हम कहते हैं agentic AI. तो agentic AI जब हम agents create कर रहे होते हैं, with the help of these particular frameworks only we are able to create that end-to-end workflow automation. I hope ये सारे terms and terminology would be clear to you, and whenever you hear something you will be able to categorize those out, and hope you find this particular video very helpful and giving you a lot of knowledge. If it is, please like the video, subscribe to the channel, leave a comment अगर आपको कोई और confusion अभी बच गया हो. In the next sessions, in the next videos, definitely we are going to take up another set of fundamental, you may say, जो भी topics cover हो रहे हैं हमारे पास, इसके beyond अब हम जाएंगे. We have already covered up what is generative AI. We have already covered up what is in the market. Now we will go further into the next video. So stay tuned to the channel. Thank you so much. See you in the next one.